हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ख़ास क्लास 10 के बच्चों के लिए है जिनका इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 में होने वाला है। अगर आपने अभी तक इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज चैप्टर सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है बट कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या आएगा, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, जिसमें हम आपके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वन लाइनर एमसीक्यूज़ का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस मिलेगा, ब्रीफ डिटेलिंग आपको मिलेगी, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट 50 हम आपके लिए लेकर आए हैं, 50 एमसीक्यूज़ वन लाइनर, जो कि आपके इस बार के अक्टूबर 2024 एग्ज़ाम के लिए ख़ास इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स ज़रूर से बनाएं। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा और आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 3 घंटे का पेपर को कम्प्लीटली पूरा तरह से लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज़ फॉर अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हिंदू मैरिज एक्ट्स was passed in dash 1955. Next one, polygamy marriage means dash more than one wife. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से याद रख लेनी है और ज़रूरत पड़े तो आप इसके नोट्स भी बना लीजिए। तीसरा पॉइंट है, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन 1829. नेक्स्ट पॉइंट, इन 1895 killing of female infants was declared a murder. Next important point is Pandit Vishnu Sastri founded Widow Marriage Association in 1860. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर लाइन में आपको कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु फाउंडेड विडो मैरिज एसोसिएशन इन 1860, तो आंसर होगा पंडित विष्णु शास्त्री। या फिर आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि पंडित विष्णु शास्त्री फाउंडेड विडो मैरिज एसोसिएशन इन डैश, कब किया था उन्होंने, तब ये आंसर आएगा 1860 में। नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट विडो रीमैरिज एक्ट टुक प्लेस विद द एफर्ट्स ऑफ डैश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, बिहार आर खासा, थारू, Bhoksa, Gujars and the Jonsaris, etc. Next important point is tribes of northeastern zone are Nagas, Khasi, Garo, Miri, Karbi, Apatawus, etc. Next important point is tribes of central zone are Santhals, Baiga, Muria, Munda and Birhor. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें, ट्राइब्स ऑफ साउदर्न जोन्स आर टोडा, कोटा, कोटा अलर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पुरुषार्था, आश्रमास एंड समाकारास आर इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न जोन आर भील्स, गरासिया एंड मीनास लिव्स इन राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज in India, tribes are generally called Adivasis. Next point is Government of India has specified 427 communities and include them in the schedule of tribes. Next important point is Purushartha is divided into 4 dash dharma, artha, kama, moksha. Next important point is Alauddin Khilji had a slave named dash Malikafur. Next important point is monogamous marriage means dash one person married to one person. Next important point is Arthashastra was written by Chanakya. Next important point is most of Buddhist writings are written in Prakrit and Pali. Next important point is Babur wrote his own biography known as Tazuke
Babari. Next important point is the Mughal Emperor Humayun introduced the study of mathematics, astronomy, and geography in the madrasas in Delhi. Next important point is Akbar added subjects like accountancy, public administration, geometry, and built a workshop. Next important point is William Bentinck adopted English as the official language of the government. Next point is Lord Hardinge in 1844 decided to grant employment to Indians who had received English education. Next point is Susruta Sanhita was written by Susruta. Next point is Charaka Sanhita was written by Charaka. Next point is in 1904 the Indian Universities Act was passed that enabled the universities to assume teaching, inspection of colleges, and undertake measures for qualitative improvement in higher education. Next important point is in 1857 the universities of Bombay, Madras, and Calcutta were established. Next point is the universities of Punjab and Allahabad were established in 1882 and 1887 respectively. Next point is Sarva Shiksha Abhiyan was a program of the central government for universalization of elementary education started in 2001. Next point is the first national education policy was passed in 1968. Next point is the Right to Education Act was passed in 2002. Next point is the new national policy of education was passed in 1986. Next point is the constitution under Article 45 provided for the state to introduce compulsory and free education for children up to the age of 14. Next point is in 1966 the report of Kothari Commission referred to education as the only instrument of peaceful social change. Next important point is the right of children to free and compulsory education act was passed by the parliament in April 2010. Next point is DRDO stands for Defense Research Development Organization. Next point is IGMDP stands for Integrated Guided Missile Development Program. Next point is Dr. Abdul Kalam developed the satellite launch vehicle SLV-3 which put the satellite Rohini into orbit. Next आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह से मोटिवेट रहें और आपके लिए नए नए वीडियोस नए नए नोट्स के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कलाम सर्व्ड इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO फ्रॉम 1963 to 1982. Next point is Dr. Abdul Kalam developed 5 projects as the director of DRDO: Prithvi, Trishul, Akash, Nag, and Agni. Next point is Dr. J.C. Bose was famous in the field of plant physiology. Next point is Dr. Homi J. Bhabha, known as the father of nuclear physics. Next important point is Dr. Abdul Kalam was famous in the field of defense technology. Next important point is Dr. Vikram Sarabhai was famous in the field of atomic energy and industrialization. Next important point is Nasiruddin At-Tusi was a scholar of mathematics. Next important point is Hakim Dia Muhammad compiled a book named Genie Dia incorporating the Ayurvedic medical knowledge. Next point is Firoz Shah Tughlaq wrote a book Tibbi Firoz Shahi. Next important point is
Ragamala was written by Pundarika Vittal. Next important point is Gita Govinda was composed on the theme of love of Radha and Krishna. ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।